हेलो 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 जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल, आपके प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर जेके तिवारी वंस अगेन हियर। जुड़ जाइए फटाफट। चैनल ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन के आंसर लेकर के रेडी हो जाइए। आ चुके हैं हम आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म पर और आपके फेवरेट टाइम रात के 8:30 बजे। रात नहीं यार, शाम के 8:30 बजे। बारिश बहुत हो रही है तो ठंडी भी थोड़ी थोड़ी हो ही गई होगी जी। प्रतिभा, शुभो, आशुबोध, नीरज, मोहिनी, मौसमी, अपर्णा, धर्मपाल, ज्योति, सभी को नमस्ते। सभी को शाम वाली नमस्ते, सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है जी। फटाफट ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म करिएगा। ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म करिए। शुरू करते हैं फिर आपकी क्लास। आज की क्लास है क्लास नंबर 8, राइट। EMRS के सेशन में आप क्लास नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं और आज के पिटारे में क्या है? विक्टोरियन नॉवेल्स एंड एशेज MCQs पार्ट 2। कल था पार्ट 1, आज है पार्ट 2। हो सकता है पार्ट 3 भी किसी दिन हो जाए, बट कल तो नहीं होगा। कल जो होगा वो विक्टोरियन पोएट्री पर होगा क्वेश्चन जी। ऑल क्लियर है? चले शुरू करें। कहाँ है सर? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लीज सेंड कर दो। वेरी पॉल्यूशन हियर। नेहा भेजो अभी नंबर, उसी पे करता हूँ यहाँ से व्हाट्सएप। डायरेक्ट आपके आंगन में गिरेगी बारिश जी। किरण कुमार काटा, गुड इवनिंग। रीता राज, सभी को गुड इवनिंग। ऑल गुड टू गो। वॉइस नॉट क्लियर? काहे नहीं क्लियर है जूली वॉइस? आई होप वॉइस इज क्लियर। आज कोल्ड है सर जी, दिख रहा है यार, पता नहीं। मुझे तो जैकेट पड़ी थी, मैंने पहन लिया। पता नहीं अभी कोल्ड होगी या गर्मी होगी तो फिर AC चला दूंगा, कुछ ना कुछ कर दूंगा। पहन लिया मैंने, शुरुआत कर दी है, दिखा दिया है कि ठंडी आ गई है, रेडी हो जाइए जी। पूजा, राधे राधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं आज के। ये रहा पहला क्वेश्चन। हियर इज द कवर ऑफ द बुक Sartor Resortes. Very important title. Sartor Resortes is a book written by Thomas Carlyle. Thomas Carlyle was born in the same year when John Keats was born. Keats was a romantic poet and Thomas Carlyle was a Victorian essayist. He wrote the book Sartor Resortes, the life and opinions of Herr Teufelsdrockh. Herr Teufelsdrockh was a German and he was a professor, right? He was the professor, and in this book Mr. Carlyle propounds the philosophy of clothes, right? He propounds the philosophy of clothes. Philosophy of clothes क्या है? Why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये। And why do we keep on changing our clothes? हम कपड़े बदलते क्यों रहते हैं? Because कपड़े पुराने हो जाते हैं, outdated हो जाते हैं, out of use हो जाते हैं, right? In the same way हमारा religion होता है। Religion भी सेम होता है। According to the time it must be updated, it must change itself, बदलते रहना चाहिए, right? जो हमारी बॉडी है that presents the naked reality, and when we wear clothes, जब हम उस पर कवर डाल देते हैं, then we hide the reality, right? और उसको बोलते हैं कि now we are civilized, right? ऐसे philosophy of cloth है Sartor Resortes में। टाइटल भी जर्मन है and Sartor Resortes का मतलब होता है टेलर रीटेलर्ड, राइट? टेलर रीटेलर्ड मतलब इसका होता है पैच करना, रफू लगाना। तो कपड़े फट जाए, रफू लगा लेते हैं। इन द सेम वे वी शुड डू विद आवर रिलीजन। इफ आवर रिलीजन इज आउटडेटेड देन वी शुड अपडेट इट, वी शुड मेक नेसेसरी अमेंड्स। नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर लेना चाहिए। इस पर पूरी बुक है। किसकी बुक है? बाय थॉमस कार्लाइल। एंड द क्वेश्चन वाज, how would one best describe Thomas Carlyle's Sartor Resortes? And this book is a combination of novel, autobiography
and essay. The book is a combination of biography, combination of novel, and then combination of essay. Right answer to the question is C here. C option is true option. C option is the correct option. It is a combination of autobiography, novel and essays. Right, correct answer is C, and all of you have answered D. Right, क्या आपने किया है? Satire on sartorial fashions and fables of medieval Europe. This is not true option. The true option is C. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. दो शार्टर रिसॉर्टर्स पर क्वेश्चंस आप याद रखिएगा. द मीनिंग ऑफ द टाइटल, एक क्वेश्चन इस पर बनता है. दूसरा क्वेश्चन बनता है हु रोट द बुक. तीसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द बुक अबाउट. तो इट इज अ नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी एंड एसेज. एंड चौथा क्वेश्चन बनेगा व्हेन वाज द बुक पब्लिश्ड. देन 1833. टाइटल इज इन जर्मन and title means the tailor retailored या repatched. Right, these are the questions from this book, Tailor Sorter Resorters. Clear? चल, next question. Question number 2. Heroes and hero worship. Heroes and hero worship is the text by John Ruskin, Matthew Arnold, Carlyle, Burke. Who wrote the book Heroes and Hero Worship? Heroes and Hero Worship is the book by Ruskin, Arnold, Carlyle और Burke. फटाफट आंसर के साथ आ जाइए. Who wrote the book Hero and Hero Worship? शाबाश. अपर्णा, जूली, सोनू, सुबोध, अजय, रीता, प्रदीप सोलंकी, प्रतिभा उपाध्याय, रजनी शाहू. शाबाश. Who wrote the book Hero and Hero Worship? And here in the book Mr. Carlyle talks about heroes of different area. Right, Prophet Muhammad is also a hero. Shakespeare is also a hero. Right, hero, they are in different area. Hero doesn't mean only जो वार लड़े वही हीरो होता है. हर फील्ड में हीरो होते हैं. नीरज, फिरोज, पूजा, शिबू, रोली, नेहा, धर्मपाल, सुबोध. राइट, ये सुबोध 6 लेक्चर्स है इसके अंदर. एंड द बुक वाज रिटन बाय थॉमस कार्लाइल. कार्लाइल की ये बुक है हीरोज एंड हीरो वर्शिप्स. सार्टर रिसॉर्टर्स, हीरो एंड हीरो वर्शिप, चार्टिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. दीज आर द बुक्स बाय थॉमस कार्लाइल. राइट, ये कार्लाइल की बुक्स है. हीरोज एंड हीरो वर्शिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Victorian age witnessed a clash. Victorian age witnessed a clash between faith and reason, tradition and modernity, Oriental and Occidental civilization, Romanticism and Neo-Romanticism. Victorian age appears between Romantic age and modern age. Between Romantic age and modern age, you have Victorian age, Victorian period. Right, Queen Victoria came to the throne in 1837 and she died in 1901. So this is the time period जिसको आप Victorian period कहते हो. And during the Victorian period, industrialization was on its peak. Industrialization was on its peak. Scientific discoveries were on their peak, and writers like Darwin wrote the book on origin of species. And origin of species once again proved that this world has not been created by God by any divine incident, but man is the product of theory of evolution. So faith and reason. Reason means science, faith means religion, and there was a clash between reason and faith, और इसीलिए you have a term Victorian compromise. Victorian compromise tried to make a compromise between faith and reason,
between science and emotion, between industrialization and romanticism. Right? There were several areas to make a compromise, and Victorian compromise इसी का नाम है. Right? Compromise between faith and reason, compromise between emotion and reason, compromise between imagination and reality. Right? This is all about Victorian age clash between faith and reason. All right? समझ आ रहा है ना? देखिए, these are not merely questions. सिर्फ ये questions नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ए टिक कर दिया और आगे बढ़ गए. ये रोज आपको कहता हूं, ये लर्निंग फेज है. यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड वंस यू आर ऑन द वे ऑफ प्रिपरेशन, दीज थिंग्स मस्ट हेल्प यू. निश्चित रूप से आपको हेल्प करेंगे ये. राइट? बिकॉज ये एक टाइप का पूरा एज का रिविजन है. अगर हम एक एक राइटर को लेकर के आए ना, तो एक राइटर को पकड़ के बैठ जाएंगे तो पूरे 2 से 3 घंटे लग जाएगा. बट 2-3 आवर्स में ये कोशिश करिए, एटलीस्ट 2 आवर्स जो आप डेली उसको देते हो, उस 2 आवर्स में बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाए. राइट? और वो बहुत सारी जब हौच पाच होगा ना, देन यू विल फील लाइक यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल. और जब वो फीलिंग आने लगे, इट मीन्स यू आर ऑन दी राइट ट्रैक. ऑलराइट जी. वीर सिंह जी को नमस्ते, अनुपम धुरिया जी को नमस्ते, शे निशा विहान जी को नमस्ते. देर से आए हैं, दुरुस्त है, कोई बात नहीं. अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हुए हैं. फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. जितना जल्दी शेयर कर देंगे उतना जल्दी ही आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे. ऑलराइट. आज जहां मेरे कई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, केबी टीजीटी का अपॉइंटमेंट लेटर बैठ रहा था, मेरे पास करीब 20 फोन आए बच्चों के, सर आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू सो मच. सभी को बधाई हमारी तरफ से. हमारे चैनल पर भी, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सबको बहुत सारी बधाइयां. वो या तो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट थे या तो वो ऑनलाइन स्टूडेंट थे. राइट? हो सकता है यहाँ पर वो ना भी जुड़े हो, बट आई हैव टॉट देम एंड दे वर माय क्लासरूम स्टूडेंट्स. सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. जी अनूप कुमार वर्मा जी को भी गुड इवनिंग. Who made this famous pronouncement? The history of the world is but the biography of great men. The history of the world is the biography of the great men only, nothing more than that. इतिहास जब आप पढ़ते हो, you read the history of Akbar, you read history of Gandhi, you read history of Indian struggle for independence. और जब आप पढ़ते हो ना, only you know the popular names, only you know the elite names, only you know the fighters name. Right? जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, लॉर्ड मैकले, मैथ्यू अर्नल्ड. किसका स्टेटमेंट है? जी जूली, मैंने एनसीईआरटी टीच की थी. मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाता हूँ टीजीटी में, पीजीटी में, और डीएसएसबी के टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस में, ईएमआरएस में, नेट में लिटरेचर पढ़ाता हूं. जी राजमणि जी नमस्ते. हु मेड दिस फेमस प्रोनाउंसमेंट? द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन. राइट? एंड दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ थॉमस कार्लाइल. थॉमस कार्लाइल के बुक से लिया है ये. द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन. राइट? ग्रेट मैन की बायोग्राफी है हिस्ट्री. ऑलराइट. हुडा, कितने दिन से बिरयानी खा रहे थे, आज दिखाई दियो. जाबरवाकी. Jabberwocky is the character in. There are 4 works. The importance of being honest. The importance of being honest is a novel by. किसकी नॉवेल है? The importance of being honest is a novel by Oscar Wilde. Fralipolipi is a poem by Robert Browning. Through the Looking Glass. Through the Looking Glass is a novel by whom? किसकी नॉवेल है Through the Looking Glass? Very very famous. Very famous Through the Looking Glass. And Goblin Market ये किसकी है? क्रिस्टीना रोसेटी की. इसका आंसर बताइए.
Jabberwocky is in fact not a character, but Jabberwocky is a poem. It is a nonsense poem. It is a nonsense poem, and this poem figures in the novel Through the Looking Glass. Right? Jabberwocky is a poem, and the poem is the part of the novel Through the Looking Glass. Through the Looking Glass आप सबने आंसर दिया है, बट मैंने पूछा कि who wrote the novel, then you didn't name. Through the Glass की पोएम है जैबरवॉकी, वहीं से ये करेक्टर की तरह यूज्ड है और उसी का नाम यहाँ पर पूछा है. जैबरवॉकी is a nonsense poem. There is a movement in जिसको कहा जाता है nonsense literature, and nonsense literature में एक तो थ्रू द लुकिंग ग्लास वाले राइटर थे जिनका नाम अभी तक आपने नहीं बताया है, और एक यहाँ पे नाम था एडवर्ड लियर का. राइट, किंग लियर नहीं, एडवर्ड लियर. राइट, एडवर्ड लियर. एंड द नॉवलिस्ट ऑफ दिस नॉवेल, मैं भी बताऊंगा नहीं, आप ही को बताना है. राइट, द नॉवलिस्ट ऑफ दिस नॉवेल जो थे वो नॉनसेंस लिटरेचर के पार्ट थे. बेसिकली द राइटर ऑफ दिस नॉवेल वाज अ मैथमेटिशियन. आपको एक क्लू भी दे दिया हूं. एंड हिज नेम वाज लुइस कैरोल. राइट, लुइस कैरोल वाज हिज सूडोनिम. हिज रियल नेम वाज चार्ल्स लुटविग. राइट, चार्ल्स लुटविग नाम था रियल, एंड द सूडोनिम वाज लुइस कैरोल. और लुइस कैरोल के नाम से वो लिखते थे. थ्रू द लुकिंग ग्लास उन्हीं की नॉवेल है, एंड इन दिस नॉवेल द कैरेक्टर ऑफ द पोएम जैबरवॉकी अपीयर्स. राइट, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है, आंसर आपको याद आ रहा था, इसके लिए आई एम प्राउड. राइट, कि आपको आंसर याद था. अब तुक्का था कि पता नहीं, बट हाँ, आंसर वाज करेक्ट. ऑप्शन इज सी, लुइस कैरोल. लुइस कैरोल चिल्ड्रंस राइटर है, बहुत फेमस राइटर है, और थ्रू द लुकिंग ग्लास उनकी चिल्ड्रंस नॉवेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following writers have something in common. What is it? Mary Seacole, J.A. Froude, Mary Kingsley, and Anthony Trollope. And common क्या है? They are all Victorians. They are all Victorians, and they are all travel writers. First and fourth, D is the right option. D is the right option. टिक कर लीजिए and proceed कर जाइए. The Crystal Palace, a key exhibit of the Great Exhibition, was designed by. In 1851, when Queen Victoria was the king, a trade fair, an international trade fair was organized. An international trade fair was organized in the leadership of the husband of Queen Victoria, and the Crystal Palace was made. The Crystal Palace was of glass and iron only. Right, and it was organized on Hyde Park, and the designer of this Crystal Palace, glass का पूरा पैलेस जो बना था, the designer of this palace was Joseph Paxton. Joseph Paxton was the designer of this Crystal Palace. This is a repeated question for most of you. Right, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कराया है in detail.
Joseph Paxton was the designer, and who was the organizer? What was the name of Queen Victoria's husband? बोले क्या नाम था उनका? क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड का नाम क्या था? प्रिंस अल्बर्ट. इट वॉज एन इंटरनेशनल फेयर जिसको ग्रेट एग्जीबिशन कहा जाता है, एंड दिस ग्रेट एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द क्रिस्टल पैलेस एट हाइड पार्क, इंग्लैंड. राइट, अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट कंसर्ट उनको कहा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here you see the name of the complete title of the book. Very very important है complete title को याद रखना. Popularly आप इसे origin of species कहते हो, but the complete title was on the origin of species by means of natural selection. On the origin of species by the means of natural selection or preservation of the favored races in the struggle for life. This was the complete title of the book Origin of Species by Charles Darwin, and Charles Darwin Origin of Species was published in 1859. 1859. Everyone is correct. Rajmadi, Pooja, Dharampal, Pratibha, Huda, Julie, Rajni, Subodh, Shabash. Right? Origin, on the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life. It was a book in the category of science. Right? In the category of science, written by the scientist, natural scientist. Right? Charles Darwin was a natural scientist, and he gave the theory of सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहीं से आती है. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहीं से आती है. और द वर्ल्ड हैज नॉट बीन मेड बाय गॉड बट इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको कहते हो, ये सब इसी बुक से आते हैं. क्लियर शिबू, नीरज, फिरोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Here you see an image, and who is this gentleman? Who among the following Victorian poets disliked his middle name? Here are 4 options, and this is the clue, the picture of that man. Now tell the answer. See, Sir Siddhi, good evening. Whose picture is this? And who was the man who disliked his middle name? Disliked his middle name means Arthur Hughes Clow means he disliked his middle name Hughes. So Arthur Clow. Dante Rossetti, Dante Gabriel Rossetti. Gerard Hopkins, Gerard Manley Hopkins. Algernon Charles Swinburne, तो Algernon Swinburne. मिडिल नेम से उसको अपनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और मिडिल नेम से जिसको बड़ी प्रॉब्लम थी, he was a great artist, he was a great poet and essayist. Or he is known for what? He is known for G.M. Hopkins, is known for Curtal Sonnet. He is known for Curtal Sonnet. He is known for Sprung Rhythm. He is known for Sprung Rhythm, and he is known for his theory of escape and stress. Right? ये इनकी सब theories हैं जिसके लिए जाने जाते हैं. And he hated his middle name. He wanted to be called Gerard Hopkins rather than Gerard Manley Hopkins. Right? These are the points for which he is remembered. Curtal Sonnet, Sprung Rhythm, Escape और In Stress. Clear? जी अनुपम धुरिया जी नमस्ते, कैसे हो?
बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फटाफट। मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन आंसर में? मजा आ रहा है कि नहीं? कि सारे रिपीटेड वाले तो नहीं है ना, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ ज्ञान और कुछ बकवास, सब कुछ वीडियो में आपके है। बेस्ट विशेष और रिंकी को भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लिख के हटा भी दिया, चलो भाई वापस ले लेता हूं मैं भी अपना। एलिजाबेथ गैस्किल्स नॉवेल मैरी बर्टन। Elizabeth Gaskell was a Victorian novelist and a biographer. She wrote the biography of Charlotte Bronte, right? Yesterday I told you. And here, what was the subtitle of Mary Burton? Mary Burton was a novel by Elizabeth Gaskell, right? Elizabeth Gaskell की novel थी Mary Burton. And Elizabeth Gaskell was an industrial novelist, a typical Victorian novelist in the manner of Charles Dickens, right? And she satirized, she caricatured the Victorian lacunas in her novels. And here, what was the subtitle? ये पूछा है. And the subtitle of Mary Burton was, what was the subtitle? शाबाश, हुड्डा, सोनू, धर्मपाल, पूजा, अपर्णा, रंजना, रजनी शाहू, यस, शाबाश, कमान कमान कमान। ऊपर भी कुछ लोग आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। प्रदीप सोलंकी ने तो आंसर ही बदल दिया, गड़बड़ कर दिया ना इन्होंने। बाकी सबका आंसर सी था, एक आंसर बी कैसे हो गया जी? सुबोध कुमार भी बी के साथ है, शिफ्टिंग शुरू हो गई है, चेंजिंग। Anybody else? Please do write. Neeraj, Sarvjit, 10 of 10. No ABCD. Very good. नेहा सिंह B. शाबाश। किसका सही माना जाए? B माना जाए सही कि C माना जाए? 2 ऑप्शंस में से किसको क्लिक कर दिया जाए? मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए ना, मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए। डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी मींस मेजॉरिटी, और अगर डेमोक्रेसी मींस मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड इनकरेक्टली। दिस इज द करेक्ट आंसर। द सबटाइटल ऑफ द नॉवेल मैरी बर्टन इज अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ एंड अ स्टोरी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। ये किसकी सबटाइटल है? ये किसकी सबटाइटल है भी किसी की नहीं? अभी किसी की नहीं? चेक करिएगा एक बार जा करके। फिलहाल आपका आंसर गलत था, आंसर करेक्ट कर लीजिए। राइट आंसर हैज बीन गिवन बाय नेहा, सर्वजीत, किरण कुमार कट्टा एंड हु, बाकी किसी ने तो डिलीट भी कर दिया जी, सुबोध कुमार, प्रदीप सोलंकी। अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ इज द सबटाइटल ऑफ द नॉवेल मैरी बर्टन, राइट? Next question. Match the following pairs of books and authors. मिडिल मार्च की सबटाइटल क्या थी? मिडिल मार्च की सबटाइटल स्टोरी नहीं, स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ है, ठीक है। चलो, कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, लंडन लेबर एंड द लंडन पुअर, past and present, and though unto this last. These are the 4 names of the books, and their writers are here: John Ruskin, Henry Mayhew, Thomas Carlyle, and Frederick Engels. Frederick Engels was a friend of Karl Marx. मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ने मिलकर के, जिसको आप मार्क्सिज्म कहते हो, ये शुरू किया था। एंड मार्क्सिज्म का मतलब क्या होता है?
वर्ग संघर्ष, class struggle, right? According to Marxist theory, there should be no one poor and no one rich. Property must be distributed equally among everyone, right? So this was the answer. This was the theory of Marxism. Thomas Carlyle was a philosopher and he was a historian as well as an essayist. He wrote the book Past and Present. Unto the Last was written by John Ruskin, and this book was very popular in India. Even Mahatma Gandhi had translated this book into Gujarati under the title Sarvodaya, right? Kis title par? Mahatma Gandhi had translated Unto this Last as Sarvodaya, right? Sarvodaya in Gujarati, and then from Gujarati in English it was again translated. So if you know the two answers, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है. Past and present. Past and present means third means third. Third का third कहाँ है? Only in one option. So option B is the correct answer. Unto this last fourth one, and fourth one goes with the first one. Yeah, right? And Condition of the Working Class. It was written by Friedrich Engels, right? And London Labour and the London Poor was written by Henry Mayhew. Clear? Respected sir, I can watch but not comment because of my household chores. कोई बात नहीं, best wishes, keep on watching. That will help you prepare for your examination. I am okay without your comments. But if you have any doubt, any query, then please do write. Time मिले तो उसको mention जरूर कर दीजिएगा. By then keep on watching. Watching is more important than commenting. Alright? And you are doing household works, that is the great work. Everybody can't do that. People like me are escapist. Next question. एक साल में इतनी सारी घटनाएं घटी थी. दिखाई दे रहा है ना? It is unimaginable that all the following events happened in 1 year. Arthur Evans discovered the first European civilization. His excavations in Crete revealed a culture that was far older than either Attic Greece or ancient Rome. First European culture was discovered by Arthur Evans. In which year? Sir Arthur Quiller Couch published the Oxford Book of English Verse. In which year? Pablo Picasso stepped off the Barcelona train to get the Orazzi, Paris. Max Planck unveiled the quantum theory. Hugo de Vries identified what would later come to be called genes. Sigmund Freud published the interpretation of dreams. Coca-Cola arrived in Britain. Right? इतने सारी events took place in a single year, and you have to tell the name of the year. 1899, 1900, 1901, 1903. Means there are 7 options, 7 clues are given, and out of 7 clues अगर आप एक भी जानते हैं, then you will click the right answer, and this is question number 12. Pooja Maurya, Uttam Suna, Rita Raj, Bushra Yasmin, right? Yes, come on. सर आपके पास भी ठंड पहुंच गई? नहीं, आज ठंड नहीं पहुंची, कपड़े नहीं मिल रहे तो मैंने पहन लिया है. ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा था तो यही पहन लिया. हमने कहा पहन ही लेता हूं, ठंड तो वहीं रहे तुम्हारे रामपुर में तो ही ज्यादा ठीक है. हम बिना ठंड के ही ठीक है. तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? ईयर पूछा है. Sigmund Freud's interpretation of dreams was published in 1900. And Coca-Cola अमेरिका से लौटा था, पहुंचा था इंग्लैंड में 1900 में. क्वांटम थ्योरी 1900 में डिस्कवर हुई थी. जीन्स 1900 में डिस्कवर हुई थी. आर्थर कलर कोच की बुक 1900 में पब्लिश हुई थी. एंड आर्थर इवांस ने फर्स्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन
को एक्सकवेट किया था 1900 में, और पाब्लो पिकासो पेरिस पहुंचे थे 1900 में। तो सब के लिए आंसर 19 है, इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। ऑलराइट, क्या हुआ रिंकी, ज्यादा ठंडी लग रही है क्या? नेहा भी तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है। क्लियर हुआ? तो दिस ऑल इवेंट्स टुक प्लेस इन 1 ईयर एंड दैट ईयर वाज 1900। दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बट 7 क्वेश्चंस आर हियर। 7 क्वेश्चंस यहां पर एक साथ दिए हैं, 7 ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चंस इन अ रो। क्लियर? याद करिएगा, इनको पढ़िएगा ध्यान से। यहां ठंड नहीं पहुंचेगी पक्का, मुझे पता है। Which text exemplifies anti-Victorian feeling prevalent in the early 20th century? Anti-Victorian feeling, right? Anti-Victorian feeling का मतलब कि the writers were not in favor of Victorian morality, right? But they went a step ahead of Victorianism, जिसको anti-Victorian कहते हैं। And which texts exemplify eminent Victorians? Jungle Book, Philistine Victorians, The Way of All Flesh। बताओ आंसर। सारे के सारे बिल्कुल नए नए कहां से ले आए हो सर? एमिनेंट विक्टोरियंस के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं। इट वॉज अ बुक रिटन बाय लिटन स्ट्रैची। लिटन स्ट्रैची की बुक थी, एंड इन दिस बुक ही टॉक्ड अबाउट 4 एमिनेंट विक्टोरियंस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड थॉमस अर्नल्ड वर द एमिनेंट among the eminent Victorians. जंगल बुक इज अ बुक बाय रुडियर्ड किपलिंग, जिस पर आपने सीरियल देखा है मोगली। द वे ऑफ ऑल फ्लेश, दिस वाज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ सैमुअल बटलर, and Samuel Butler was one of the boldest rebels of Victorian period. Boldest rebels में उनका नाम आता है। And these 2 books, Eminent Victorians and The Way of All Flesh, exemplify anti-Victorian feeling. First and fourth are correct. First and fourth are correct. निशा, सोनू, उत्तम सुना, सुबोध, धर्मपाल, प्रतिभा, नीरज, रीता, फिरोज, शाबाश। एमिनेंट विक्टोरियंस एंड द वे ऑफ ऑल फ्लेश, दीज 2 बुक्स exemplify anti-Victorian attitude. Anti-Victorian attitude exemplify करते हैं, and both of them were published in the early 20th century. Next question, Z. Kiran Kumar Kata and Huda Tahir. How does John Stuart Mill define happiness? John Stuart Mill was a philosopher, and John Stuart Mill is known for his utilitarian philosophy, right? And what is happiness in the words of John Stuart Mill? Happiness is doing what one wants to do, leading a fulfilling life, pleasure and the absence of pain, or virtuous activity. What is happiness? Happiness किसको कहा जाएगा? Question number 14. सोनू, अजय, उत्तम. Very nice. Question number 14. What is happiness? बुशरा, किरण, नीरज, वेरी गुड, कमान कमान। डर क्यों रहे हो भाई? डर के आगे जीत है। धर्मपाल, शाबाश। हैप्पीनेस क्या है कि कुछ भी आंसर दे लो,
है ना। कुछ भी आंसर दे लो उसको हैप्पीनेस कहेंगे। रीता राज से निशा आरती नेहा सुबोध पूजा रिंकी why doubt Uttam? You have put a question mark. Happiness means pleasure and the absence of pain. Happiness means pleasure and the absence of pain. When there is no pain, you are happy, and if there is pain, you are not happy. And if there is both pleasure and pain, it means you are in love, you are not happy. Those who are in love, वो तो कभी हैप्पी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं होते हैं. And doing what one wants to do, ये तो लिबर्टी है. Doing what one wants to do, this is not happiness, but this is liberty, right? Leading a fulfilling life, this is not happiness. Happiness means there is no pain, there is only pleasure. According to John Stuart Mill, happiness is pleasure and absence of pain, right? Pleasure and absence of pain is called happiness. Clear? Question number 14. What did Thomas Carlyle mean by close thy Byron, open thy gate? Close thy Byron and open thy gate. Byron means Lord Byron, who was a romantic poet, English romantic poet, and Goethe, described by Matthew Arnold as the sagest head of Europe. He was also a romantic but not English, a German, right? Close thy Byron, open thy gate. What figure of speech has been used here? कौन सा figure of speech है यहाँ पे? Close thy Byron and open thy gate. Here the figure of speech is metonymy, right? Figure of speech is metonymy. And what did Carlyle mean by the sentence close thy Byron, open thy gate? Britain's preeminence as a global power will depend on mastery of foreign language. Not at all. ना तो यहाँ बायरन है कोई और ना तो यहाँ गेटे है. Abandon the introspection of the romantics and turn to the higher moral purpose found in Goethe. This is true answer. This is the correct answer, right? Who was Byron? Byron is romantic, and Byron is known for his immoral behavior. Byron is not known for his ethics, and Goethe is known for higher moral purposes. And this is the meaning of Lord Byron's statement, close thy Byron and open thy gate, right? Go towards higher moral purpose and leave the Byron, leave the immoral culture, leave the immoral literature behind. This was the meaning of the statement, close thy Byron and open thy gate. Alright, ये किसका statement है? Carlyle का. And what is the meaning of the statement? Meaning is that abandon the introspection of the romantics and turn to the higher moral purposes found in Goethe. Next, Conrad. Conrad means Joseph Conrad, right? Conrad means Joseph Conrad, and Joseph Conrad was basically a Polish. Basically, he was a Polish writer, and when he came to England in his adolescence, he was unable to speak English, but he became one of the greatest novelists of the period. He wrote the novel, many novels, not 1, 2, 3, right? And one of the novels is Heart of Darkness. And here in the Heart of Darkness, he describes the country Africa, South Africa especially. And अफ्रीका को बोला है that is the heart of darkness. और इसी नॉवेल पर चिनुआ एचबी wrote an essay
what was the name of his essay that Chinua Achebe wrote on the Heart of Darkness? I hope you remember, right? The students of EMRS or the student of DSSB, उनको तो मैंने खुद ही पढ़ाया है इनको. What was the name of the essay that Chinua Achebe wrote on Conrad's Heart of Darkness? And Chinua Achebe described Joseph Conrad as a thoroughgoing racist, right? Thoroughgoing racist इनको describe किया है Chinua Achebe ने. Joseph Conrad को. His Heart of Darkness presents two conflicting discourses present in his own culture. Identify the two discourses from the following: modernism and anti-colonialism, modernism and structuralism, anti-colonialism and Eurocentrism. This is the right answer to the question C. Right, question number 16. Right answer is C. Anti-colonialism and Eurocentrism. Anti-colonialism का means कि colonialism के against Europeans colonized Africa, and to a certain extent he was against Europeans here, and then we find that he was a pro-European Eurocentric opinion he possessed, right? That is the two conflicting forces, anti-colonial and Eurocentric. Next question, question number 17. Which one of the following best describes the general feeling expressed in literature during the last decade of the Victorian era? Last decade of the Victorian era means 1891 to 1901. This is the last decade of Victorian era. And which of the following best describes the general feeling expressed in literature during the last decade of the Victorian era? He studied melancholy and aestheticism, the triumph of science and morbidity, sincere earnestness and Protestant zeal, raucous celebration combined with paranoid interpretation. What is the right answer here? In the last decade of the Victorian period, we saw the emergence of aesthetic movement, emergence of the movement जिसको आप बोलते हो art for art's sake. Art for art's sake was the part of aesthetic movement, and Walter Pater and Oscar Wilde were the leaders of this movement, aestheticism, where art की जो duty है, it was not the duty of the literature to propagate, but beauty of art lies in art. Art should be written for the sake of art. That is aestheticism, right? So right answer to the question is which one? Right answer to the question is A, right? सबका आंसर एक तरफ से A है, इसलिए सबका नाम पढ़ा नहीं है. I hope you understand what I mean. मेरा मतलब क्या है समझ गए होंगे आप. एस्थेटिसिज्म का मतलब है कि लिटरेचर हैज नो अदर पर्पज, राइट? लिटरेचर हैज नो अदर पर्पज एक्सेप्ट टू बी लिटरेचर, राइट? और कोई पर्पज नहीं है, प्रोपेगेंडा फैलाना इसका पर्पज नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप अपने पार्टी की बात इस लिटरेचर के थ्रू कहो. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, and it should be the product of imagination only, nothing more than that. That is aestheticism. All right, so answer A is correct. Next, who coined the phrase the two nations to describe the parity in Britain between the rich and the poor? Rich and the poor. जी मैडम सर नमस्ते. रिच एंड द पुअर दो लोग हैं, दो टाइप के लोग हैं, और ये जो दो टाइप के लोग हैं दे क्रिएट द टू नेशंस. इंडिया दैट इज भारत, दो नेशन क्रिएट करने वाले लोग हैं यहाँ.
or who coined the phrase the two nations to describe the disparity of Britain in between the rich and the poor? बताओ आंसर। जी कमान कमान। एक नॉवेल थी, उसी नॉवेल की सब टाइटल थी द टू नेशंस and the name of the novel was Sibyl. Sibyl was the novel and it was subtitled as The Two Nations. And it was written by the two-time Prime Minister of England. The two-time Prime Minister of England and the two-time Prime Minister of England was Benjamin Disraeli. Two-time Prime Minister of England was Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli was a novelist as well, and he wrote the book, right? He wrote the book Sibyl, The Two Nations in 1845. So who coined the term? Who coined the phrase the two nations? Benjamin Disraeli, to describe the disparity in Britain between rich and poor. Right answer to the question is C. Sibyl, The Two Nations. Next, Chartism. Chartism is a book by Thomas Carlyle. Chartism is the book by Thomas Carlyle. And there was a movement in England called Chartist movement. A Chartist movement in 1840s. Chartism, a political movement that took its name from the People's Charter, had points. Identify the one point on the following list that was not Chartist. Right? Charter आया था, चार्टर एक्ट 1832, जिसके तहत बहुत सारी रिफॉर्मेशन हुए थे इंग्लिश लॉज में, इंग्लिश वर्क कल्चर में। एंड 1 2 3 4 7 points are given here, and out of the 7 points, 7 points में से 6 points were mentioned by the Chartist movement. एक कौन सा था जो नहीं था? यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज, सफरेज मीन्स राइट टू वोट। मैनहुड को सबको राइट टू वोट दे दिया गया था, irrespective of their class or culture. Equal electoral districts, vote by secret ballot, payment of MPs, no property qualification for MPs, annual parliament, सारी बात मान ली गई थी, एक को छोड़ करके, and that was comprehensive insurance scheme for the labor. इसको छोड़ करके rest of the 6 were the part of Chartist movement, were the part of Chartism. इस Chartism के थ्रू यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज, इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट पेपर, पेमेंट फॉर एमपीज, नो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन फॉर एमपीज एंड एनुअल पार्लियामेंट्स होगी, ये चीजें सैंक्शन कर दी गई थी। बट देयर वाज नो स्कोप, नो रेफरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स। चल, लुइस कैरोल, What was the real name of Lewis Carroll? अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था,
और क्वेश्चन भी उसी पर आ गया है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ लुइस कैरोल। लुइस कैरोल लेडीज है कि जेंट्स, पहले ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 20, Lewis Carroll is a pseudonym refers to E.L. Woodward, Charles Lutwidge Dodson, Michael Brock, W.E. Houghton। शाबाश। सुबोध, जूली, रीता, अपर्णा, उत्तम, हुजा, शेनिसा, रीता, नीरज, वेरी गुड, जूली। लेडीज है ये कि लेडी है? लेडी है कि लेडीज है? प्रतिभा उपाध्याय, सोनू, पूजा, नीरज, शाबाश जी। दिलवाले भाई साहब, रुद्रेश जी को राम राम। धर्मपाल, रीता, सर्वजीत, ज्योति, सोनू भगोतिया, अच्छा मेल है, ओके। इसी दोनों में कोई है एक, मेल या फीमेल। जी, किरण कुमार भी कह रहे मेल है, जूली कह रही है कि लेडी है। तो पहले तो एक बात ये क्लियर कर लो कि लुइस कैरोल मेल है, लेडी नहीं है और लेडीज भी नहीं है। और रियल नेम उनका जो है वो रुद्रेश राठौर जी बताएंगे। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ Lewis Carroll? That was Charles Lutwidge Dodson, right? Charles Lutwidge Dodson was the real name of Lewis Carroll. Lewis Carroll is known for his novels like Looking Through the Glass and Adventures of, है कुछ ऐसे, है ना? पता नहीं कितना याद रखोगे यार, किस किस को याद रखें, किस किस को भूलें। एग्जाम बड़ी खराब चीज है, जो याद करते हैं वही भूल जाता है। और जहां एक बार एग्जाम दे लिए तहां सब याद हो जाएगा, कुछ फिर भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन इंडिया? इनमें से इंडिया में कौन पैदा हुआ था? पॉल स्कॉट, लॉरेंस डरेल, E.M. Foster or V.S. Naipaul? Yes, Rita, Alice in Wonderland. शाबाश, Alice in Wonderland and Looking Through the Glass, ये चार्ल्स लुटविग की नॉवेल्स हैं। Who was born in India? क्वेश्चन नंबर 21, आंसर बताइए फटाफट। बुशरा कह रही है V.S. नाइपॉल, जूली कह रही है कि नहीं V.S. नाइपॉल नहीं, पॉल स्कॉट। पूजा मौर्य, सोनू भगोतिया, नेहा सिंह, हुदा ताहिर, शाबाश। Who was born in India? V.S. नाइपॉल इंडियन ओरिजिन के हैं वो, बट इंडिया में पैदा नहीं हुए थे। दो हिज सब्जेक्ट जो है, कंटेंट जो होता है नॉवेल का, वो इंडिया से ही रिलेटेड होता है। जैसे कि इनका वर्क है इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया एंड एरिया ऑफ डार्कनेस। E.M. Foster was a British novelist and he wrote the novel A Passage to India, and he was not born in India. Paula Scott, she wrote several novels on Indian continent, right? But वो भी इंडिया में नहीं पैदा हुए। इंडिया में जो पैदा हुए हैं उनका नाम है लॉरेंस डरेल। लॉरेंस डरेल, he was born in India. अब now it is your duty to search the place, search the name of the city where he was born, right? कहां पर पैदा हुए थे ये ढूंढिएगा। Right answer to the question is B. Next, Heart of Darkness is a novel by Joseph Conrad set in Africa. It starts from the river Thames और जाती कहां तक है? कांगो रिवर तक। और Congo is in Africa, and the question is who is the narrator of the Heart of Darkness? अभी जोसेफ कॉनरेड फिर आएंगे जब हम 20th सेंचुरी लिटरेचर पर आएंगे, फिर उनका जिक्र आएगा। He is a link between 19th and 20th.
right? Who narrates Heart of Darkness, and Heart of Darkness is narrated by an unnamed narrator. The name of the narrator is not confirmed, unnamed narrator है यहाँ पर. Next question, 23rd. In which year did the Great Exhibition take place? Just a few minutes ago, you solved the question. Joseph Paxton, the architect of the Crystal Palace, and in the Crystal Palace, the Great Exhibition took place. And when? The question is, when, in which year did the Great Exhibition take place? Question number 23rd. When the Great Exhibition took place? Rita Raj, Ajay Mishra, Subodh Kumar, Pratibha Upadhyay. प्रतिभा उपाध्याय, लकी उपाध्याय कहाँ गई? उत्तम सुना, रानू निषाद, सही निशा बिहान, अपर्णा, फिरोज, कविता, हुदा, सोनू, नीरज, जूली. राइट, धर्मपाल, खिलन सिंह राजपूत. The year when the Great Exhibition was organized was 1851. The year was 1851 when the Great Exhibition was organized in Hyde Park, London, right, in the Crystal Palace, organized by Prince Albert, and the designer of Crystal Palace was Joseph Paxton. All right, next question, 24th. Anthony Burgess, he is a Victorian novelist. Anthony Burgess' last novel, published in 1993, is called A Dead Man in Deptford. A Dead Man in Deptford, who is the central character to whom the title refers. Who is the central character to whom the title refers, though it is a typical question for you people, right? Sir Walter Raleigh, Sir Philip Sidney, Christopher Marlowe, and Earl of Southampton, and these four जो है ये सब एलिजाबेथन है. Anthony Burgess' last novel, published in 1993, A Dead Man in Deptford, who is the central character? Central character is Christopher Marlowe, right? Ji Uttam, central character is Christopher Marlowe, and there is another poet in the character in the novel, and that is John Keats. Clear? Christopher Marlowe and John Keats. कल आई थी, आज अभी तक नहीं आई है, तभी तो मैंने पूछा, मुझे लगा कि आपकी सिस्टर है वो. During the years 1830 to 1850, the illusion of peace in Victorian England was broken. The illusion of peace in Victorian England was broken by such incidents as the revolution in France and the Chartist movement in England, the general strike of 1835 and the rail tragedy of 1847, the visionary libertinism of poets and the lawless embodiment of revolution, the disaster of Indian mutiny, and the incompetent bungling of the Crimean War. कौन सा ऐसा वो फैक्ट है जिसने जो सो कॉल्ड इल्यूजन था कि विक्टोरियन एज में एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन पीसफुली, उसको पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया था, उस भ्रम को खत्म कर दिया था. What was the movement? That was during the years 1830s to 1850s. ये क्वेश्चन है जी. उत्तम, सही निशा, कमान कमान, शाबाश. सुबोध, शाबाश, वेरी गुड.
During the years 1830 to 1850s, the illusion of peace in Victorian England was broken by such incidents. जी, खिलन सिंह राजपूत, धर्मपाल, रानू निषाद, नीरज, जूली, प्रतिभा, सोनू, पूजा, अपर्णा, रीता, इन सब ने आंसर कर दिया है और किसी का आंसर अभी तक सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? मैंने कहा ना, किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब किसी का आंसर सही नहीं है ना? तो फिर सही आंसर क्या है? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है? You can think and you can click. Give it a thought. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड राइट आंसर इज डी हियर, द डिजास्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी एंड द इनकम्पिटेंट बंगलिंग ऑफ क्रीमियन वॉर। जी खिलन जी, प्लीज स्टार्ट टॉपिक वाइज डिटेल्स फॉर नेट एग्जामिनेशन। डेफिनेटली जो है खिलन जी, आई हैड स्टार्टेड टॉपिक वाइज and I completed, as you would have watched, one unit that was literary criticism, and then I started literary theory, and in literary theory I made a few videos like on new criticism, formalism, and then the rolla bars, then deconstruction। इतने वीडियोस हमारे इस पर भी बने हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है होपफुली संडे को आपको मिलेगी, दैट विल बी ऑन मिकाइल भक्तिन एंड देन psychoanalysis. I am working on those PPTs as well, right? Or very soon you will get, if not video, then at least you will get the audio lecture for your NET examination. I am committed to completing videos on each and every topic of NET, and I'll be doing that. But meanwhile the examination date for EMRS would declare हो गई, तो I got messages from a few of my students और उनके वजह से I had to start this class for EMRS. But here the questions that you are getting, they are either from NET examination or their label is for NET examination. या तो उनका NET का है ही है वो PYQ है, या तो NET का उनका लेबल है वो क्वेश्चन है। And I prepare these questions in keeping my mind the NET examination, right? That is to be expected. वो भी जो है इसी दिसंबर में होना है और इसलिए उसको भी दिमाग में लेकर के चलते हैं। and these classes will definitely help you clear your examination, I hope, right? And once again I reassure you कि I will make videos on all the topics of NET, alright? And that by the end of January. अभी तो कमिटमेंट नहीं है, अभी तो इसी पर है कमिटमेंट। फिलहाल 15th of दिसंबर तक हम EMRS के साथ रहेंगे। जितने भी EMRS के फॉर्म भरे हैं पहले उनका सिलेक्शन करवा दिया जाए, फिर नेट पर आ जाएंगे। ठीक, माय कोर एरिया इज नेट, राइट? आई एम एक्सपर्ट इन नेट, राइट? एंटायर सिलेबस आई टीच इंग्लिश लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर। I teach literary criticism, I teach literary theory, I teach forms and movement, and I have expertise in literary terms as well. ये सारे हमारा प्रेफर्ड एरिया है और वो एरिया है जहां से आप
ये कह सकते हो कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, इस टाइप वाली हाल है। तो वहां पर जो है इसलिए हम यहाँ अभी थोड़ा सा पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। 6 दिसंबर को नेहा नेट का एग्जाम है, तो 6 दिसंबर तो कुछ कर ही नहीं सकते, यू हैव ओनली 7 days लेफ्ट, और आज के बाद तो ओनली 5 days आर लेफ्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज 26th। Which one of W.M. Thackeray, William Makepeace Thackeray's novels has the following as the closing sentence? Which of us is happy in this world? इस दुनिया में खुश कौन है? Which of us has his desire or having it satisfied? किसके पास उसकी डिजायर है और कौन डिजायर पूरा करके खुश है? ये एक नॉवेल है विलियम मेकपीस ठाकरे की, उसकी क्लोजिंग लाइन्स हैं, ये लास्ट लाइन्स हैं, एंड नेम ऑफ द नॉवेल इज वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर, द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल इज अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, एंड द टाइटल वैनिटी फेयर वाज टेकन फ्रॉम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से उसकी टाइटल ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड एक सीरीज भी आई थी, जो है इस पर सीरियल आता था। हु रोट द बुक ट्रेजर आइलैंड? सैमुअल बटलर, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, थॉमस हार्डी और जॉर्ज एलियट। ट्रेजर आइलैंड is a book by a Scottish writer. And who was the Scottish? ट्रेजर आइलैंड किसकी नॉवेल है? आर.एल. स्टीवेंसन की। शाबाश, आर.एल. स्टीवेंसन की नॉवेल है ट्रेजर आइलैंड। 28। अगर आपका भी एग्जाम है खिलन भाई, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपका एग्जाम अच्छा होगा, आई होप। Which one of the following essays holds that as the method realism is complete failure? Right? Realism was the favorite method of 19th century Victorian novelist. Right? Victorian novelist का favorite area था realism, and as a method realism is a complete failure. अब realism is a complete failure ये कौन डिक्लेयर कर सकता है भला? वही ना जो रियलिज्म के अगेंस्ट हो, और रियलिज्म के अगेंस्ट, विक्टोरियनिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट होता है इन द लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियनिज्म, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिसिज्म। और वो एस्थेटिसिज्म मूवमेंट में कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। एंड ऑस्कर वाइल्ड की लाइन है फ्रॉम द डीके ऑफ लाइन। राइट, द डीके ऑफ लाइन की लाइन है एज मेथड रियलिज्म इज अ कंप्लीट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, here a picture is given and I have already told you about the answer of this question. पहले ही आपको इसका आंसर बता दिया है। बताइए क्या है इसका आंसर? बोलिए फटाफट। मार्लो and John Keats. B and D are in D, or B and D are in D. It means answer is D.
जी सविता, अमेरिकन लिटरेचर भी करवाऊंगा बेटा, अमेरिकन लिटरेचर भी कराऊंगा वंस ब्रिटिश लिटरेचर इज ओवर, और उसके बाद अमेरिकन लिटरेचर के साथ वर्ल्ड लिटरेचर भी कराऊंगा, राइट, वर्ल्ड लिटरेचर भी कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, सबकी जिम्मेदारी मेरी है, कमिटमेंट है मेरा। और अभी तो 15 दिन है ना अपने पास, 15 तारीख तक करना है ना हमें, और वी हैव 15 डेज, और 15 डेज में आप कम से कम कितने, 2 संडे निकाल दीजिए तो बचे डेज 13, 13 डेज में एटलीस्ट यू विल सॉल्व 700 क्वेश्चंस, और उस 700 क्वेश्चंस में विक्टोरियन के बाद पूरा 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के बाद फिर हम अमेरिकन पर आ जाएंगे, वर्ल्ड लिटरेचर पर आ जाएंगे। और एक बार जब अमेरिकन वर्ल्ड ये सब सेपरेट सेपरेट क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद हम कंप्लीट पेपर पर आएंगे आपके, राइट, कंप्लीट पेपर जहां पर अमेरिकन, अफ्रीकन, जो है ऑस्ट्रेलियन, कैरिबियन, इंडियन सब होगा, सबको लेकर के कंप्लीट पेपर, कंप्लीट पैकेज ऑफ 80 क्वेश्चंस, राइट, दैट विल बी लाइक एग्जाम पेपर। तो वहां से भी फिर आपको मदद मिलेगी। अभी तो हम एज वाइज चल रहे हैं, है ना। क्या क्या लिखी हो उसने निशा, समझ नहीं आया मुझे। THT का मतलब क्या है, ये नहीं समझ आया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th, which of the following novels by Hardy is the tragedy of unfulfilled aims? ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिल्ड एम्स, ये कौन सी नॉवेल है हार्डी की? जूड द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। Which novel is described as the tragedy of unfulfilled aims? Yes, mock text paper. Which of the following novels by Hardy is described as tragedy of unfulfilled aims? अजय जी आंसर डिलीट ना किया करें। जूड द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, एंड फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जी बिल्कुल, टीजीटी के लिए भी आपका काम यहां से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, लिटरेचर पढ़ते रहिए, टीजीटी पीजीटी अपने आप फंसता रहेगा उसी में। द ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिल्ड एम्स, ये कौन सी नॉवेल है? दिस वाज द क्वेश्चन, एंड फिरोज, प्रतिभा, रीता, पूजा, नीरज, जूली, हुडा, शेख, निशा बिहान, इन सब लोगों ने, उत्तम सिन्हा, दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। अब ये यूपी के भी सिलेबस में है, यूपी पीजीटी में थॉमस हार्डी, राइट जी। इतने लोगों ने आंसर दिया है जिनका नाम मैंने लिया था, और सारे लोगों ने बड़ी तसल्ली के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, और इतनी तसल्ली के साथ, इतने सुकून के साथ कि किसी का भी जवाब सही नहीं है, किसी का भी जवाब सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर इज डिफाइंड एज ट्रेजेडी ऑफ अनफुलफिल्ड एम्स, और ये किसी और ने नहीं, हार्डी हिमसेल्फ said about the novel that it is the tragedy of unfulfilled aims. Right answer is A here. Right answer is A. फिर से चेक करिएगा जा करके, it is a tragedy of unfulfilled aims. Clear? Next question. The subtitle of the novel Tales of the D'Urbervilles is a novel by Mr. Thomas Hardy, and what was the subtitle of the novel Tales of the D'Urbervilles? तुम्हें ऐसा ही लगता है, तुम्हारी गलती नहीं है, लगने की गलती है ये। फर्स्ट आंसर फ्रॉम माय साइड, क्या है फर्स्ट आंसर? उत्तम समझ नहीं पाया, व्हाट डू यू वांट टू से? अच्छा, अरे भाई कुछ लोग होते हैं जो
एक बार फोन ना रिसीव करो तो कई बार करते रहते हैं। चलो, क्या इसका आंसर है 31st का? टेस्ट ऑफ द डियरबर वाइल्स का सब टाइटल क्या है? अ प्योर वुमन? नहीं, गलत जवाब। ये जितने लोगों ने लगाया सबका गलत जवाब, नाम नहीं पढ़ूंगा। इसकी जो पूरी टाइटल है अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, ये है पूरी टाइटल टेस्ट ऑफ द डियरबर वाइल्स की। राइट, टेस्ट ऑफ द डियरबर वाइल्स की जो टाइटल है वो क्या है? पूरी टाइटल है उसकी अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड टेस्ट ऑफ द डियरबर वाइल्स। ये रही नॉवेल। कहां पे चले? विकिपीडिया पे। विकिपीडिया के ही आप एक्सपर्ट हैं, है ना? देखिए कवर पेज कौन सा है, उसी पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी बुक है और पूरी टाइटल तक ये लोग नहीं देते, पूरी टाइटल नहीं देते, इसीलिए आप लोग गड़बड़ कराते हो। ये देखो, टेस्ट ऑफ द डियरबर वाइल्स, अ प्योर वुमन faithfully presented. This was the complete title of the novel. Right, ये नॉवेल की कंप्लीट टाइटल है। किंडल एडिशन पर फ्री में है, ऑडियो बुक पर फ्री में है और हार्ड कवर 312 की है। और ये फ्री है का मतलब अगर आपके पास ऑडियो बुक है तो आप मुफ्त में इसको पढ़ सकते हो। अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Under the Greenwood Tree. Under the Greenwood Tree is a novel by, किसकी नॉवेल है Under the Greenwood Tree? ये बता दीजिए फटाफट। Under the Greenwood Tree is a song in one of the plays of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के एक प्ले का सॉन्ग है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि किस प्ले का सॉन्ग है, किस प्ले का सॉन्ग है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। और फिर बताइएगा कि हुज नॉवेल इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री, नॉवेल किसकी है। Whose novel is Under the Greenwood Tree? आंसर इसका टॉमस हार्डी और एज यू लाइक इट का ये सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd। एबल विटेल इज अ करेक्टर। एबल विटेल एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। मीनाक्षी गहलोत जी को भी नमस्ते, बड़े दिनों बाद दर्शन दे रही है मैडम। एबल विटेल इज अ करेक्टर इन विच नॉवेल? In which novel the character appears? Abel Whittle. Abel Whittle is the character in the novel The Mayor of Casterbridge.
द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का करेक्टर है एबल विटेल, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। A protagonist writes a letter of confession, but it gets lost under the carpet, only to be found on the wedding day. Who is the protagonist? अच्छा, आप बाद में देखती हैं जब टाइम मिलता है। वेरी नाइस, बस देखा करिए जब भी टाइम मिल जाए, देखना जरूरी है। कब देखते हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। A protagonist writes a letter of confession. The name of the protagonist is Tess of the D'Urbervilles. सबको इसका जवाब पता है। और किसके लिए लिखती है? अपने हस्बैंड एंजल क्लेयर के लिए, और उसको डोर के नीचे डाल देती है। बट द लेटर डोर के नीचे नहीं, कारपेट के नीचे चला जाता है। एंड द लेटर वाज फाउंड ऑन द वेडिंग डे ओनली, और बिकॉज ऑफ दैट ट्रेजेडी हैपेंस। Next question, that is 35th. In which of Hardy's novels does the character Farmer Boldwood appear? Farmer Boldwood किसमें character है? Far from the madding crowd, Return of the native, Pair of blue eyes, Mayor of Casterbridge. Yes, Sergeant Troy, Farmer Boldwood, Gabriel Oak, Fanny Robin, बाप्सी बा एवर्डेन, ये सब कहां है? सब एक ही नॉवेल में है, जितने नाम आपको बता दिए हमने। 35th का आंसर क्या है? शाबाश, अजय मौर्य, सॉरी अजय मिश्रा का जवाब 100% गलत है। पूजा का जवाब सही है, उत्तम का सही है, जूली का सही है, फिरोज का सही है। एक करेक्टर यहां पर दिया था, मैंने आपको करेक्टर्स 4-5 बता दिए कि फार्मर बोल्डवुड, सर्जेंट ट्रॉय, बाथसीबा एवर्डेन, गैब्रियल ओक, फैनी रॉबिन, ये सारे करेक्टर्स कहां हैं? एंड ऑल दीज करेक्टर्स आर इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, राइट? ऑल दीज करेक्टर्स आर इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Thomas Hardy's last major novel was? Hardy's last major novel, Tess of the D'Urbervilles, Jude the Obscure, The Return of the Native, The Trumpet Major. Last major novel कौन सी है? Question number 36. Last major novel is Jude the Obscure. Jude the Obscure was his last written novel. Last written novel was Jude the Obscure, but not the last published novel. The last published novel was the Woodlanders, right? The last published novel was the Woodlanders. It was earlier serialized, and last written novel जो थी, that is Jude the Obscure. Answer is B. 36th, 37th. Like many other novelists, Hardy employed language variation, dialect and standard with a purpose. Shakespeare had also employed language variations, blank verse, prose and heroic couplet with a purpose. In this respect, which of the following statements is correct? Hardy's major characters such as Tess and Jude always speak local dialects as per their social position. His major characters such as Tess and Jude rarely speak in local dialects in spite of their social positions. His major characters such as Tess and Jude rarely speak in standard language in spite of their social standard, and his major characters such as Tess and Jude rarely speak in a mixture of dialect and standard. हार्डी के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं
like Tess and Jude, they never speak in dialect. They always speak standard language, irrespective of their class, irrespective of their social position. So right answer to the question is B. B is the correct answer, right? They speak in local dialects, right? They rarely speak in local dialects in spite of their social positions. And if they do not speak in local dialects, then in which language they speak? They speak in standard language, right? They speak in standard language. Right answer is B. Next, 38th. God is referred to as the president of immortals. प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स कहा है गॉड को टॉमस हार्डी ने। टॉमस हार्डी बता दिया तब तो आंसर ही क्लियर हो गया। पैराडाइज लॉस्ट, वेटिंग फॉर गोडो, व्हाइट डेविल तो इनका है नहीं। जी मीनाक्षी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। क्वेश्चन ये था कि जो अपर क्लास पीपल होते हैं, जैसे जो लोग दिल्ली में होते हैं, they speak standard Hindi or they speak English, right? But the people who are out of Delhi, the from rural people जो हैं, rural backgrounds जो हैं, they speak their local dialect, right? अब language is associated with the social position, in fact, right? Language is associated with the social position, और इसलिए जो हार्डी के characters हैं, they are rustic characters. They are not urban characters. They are far from the madding crowd. वहां से characters होते हैं, but such characters जो prominent major characters हैं, they speak standard language. They do not speak local dialect. But there are characters in far from the madding crowd. They are shepherds and shepherdesses, and they speak dialect. Dialect means local tongue. Clear? तो ये था क्वेश्चन। गॉड ऑफ इमोर्टल्स जो है वो टेस्ट ऑफ द डियर वाइल्स में डिक्लेयर किया है मिस्टर हार्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी बिगिंस विद द सॉम्बर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डेन हीथ? सॉम्बर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डेन हीथ, हार्डीज नॉवेल, राइट? वन मोर नॉवेल, wuthering heights, वो भी एग्डेन हीथ से ही है। और यहां पर विच ऑफ द हार्डीज नॉवेल बिगिंस विद द सॉम्बर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डेन हीथ? समझ आ गया मीनाक्षी की नहीं? जूड द ऑब्सक्योर, रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द madding crowd एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री। द नॉवेल रिटर्न ऑफ द नेटिव, यहां पर एक नेटिव का जो होता है वो रिटर्न होकर के आ रहा होता है पेरिस से। एंड द नॉवेल जो है इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डेन हीथ एंड देयर इज अ हीरो हु हैज टू हीरोइंस। Which of the following poems by Thomas Hardy was originally titled By the Century's Deathbed? Originally titled By the Century's Deathbed, what was the real टाइटल? सॉरी, व्हाट द रियल टाइटल अब बिल्कुल अलग है। ओरिजिनली जो टाइटल थी द बाय द सेंचुरीज डेथ बेड, व्हिच इज द राइट आंसर? द मिनट बिफोर मीटिंग, न्यूट्रल टोन्स, द डार्कनिंग थ्रश, द ऑक्सन। These are the poems by Thomas Hardy, and one of the four poems was originally titled By the Century's Deathbed. And what is the real title of the poem now? जी अपर्णा, पूजा, उत्तम, प्रतिभा, जूली, सोनू, रीता, सयनिशा, किरण कुमार कट्टा, रानू निषाद, फिरोज, धर्मपाल। वेरी गुड। शाबाश। मीनाक्षी गहलोत, सुबोध। The
ओरिजिनल टाइटल बाय द सेंचुरीज डेथबेड, राइट, ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज डार्कलिंग थ्रश। डार्कलिंग थ्रश इज द रियल टाइटल जो अब है आपके पास। ओरिजिनली इट वाज टाइटल्ड एज बाय द सेंचुरीज डेथबेड। राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41st, एंडीमियन इज अ नॉवेल। एंडीमियन इज अ नॉवेल। अच्छा है जॉन कीट्स ऑप्शन में नहीं है, नहीं जैसे आपने कल आंसर लगाया था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था द फ्रेगमेंटरी अनफिनिश्ड नॉवेल एम्मा वाज रिटन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर्ड जेन ऑस्टिन। हियर टुडे एंडीमियन इज अ नॉवेल बट इन द ऑप्शन देयर इज नो जॉन कीट्स। Who wrote the novel Endymion? And I want to clear here one more point. In the novel, the novelist had caricatured another novelist और उसका नाम था क्या? William Makepeace Thackeray. William Makepeace Thackeray was caricatured in the novel. What was the name of the novel? It was Endymion. And who wrote the novel Endymion? Right? पूजा, अजय, सोनू, धर्मपाल, हुडा, जूली, फिरोज, प्रतिभा, रानू, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीरज कुमार, शे, निशा विहान, सुबोध कुमार, कितना जबरदस्त तुक्का लगाते हो ना, इतना जबरदस्त तुक्का लगाते हो ना कि एग्जामिनर जो है पूरी तरीके से हिल जाए। एग्जामिनर हिल जाए। तुक्का ही लगाओ ना, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, तुक्का ही लगाए हो ना। अपर्णा, नीरज, रीता सब तुक्का वाले हैं, है ना। एंड एंडीमियन इज अ नॉवेल नॉट बाय जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट की नॉवेल नहीं है वो। दिस वाज अ नॉवेल बाय बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली की नॉवेल है। रीताज आंसर इज ट्रू एंड रेस्ट ऑफ द तुक्काज आर नॉट ट्रू। तुक्का हमेशा सही नहीं जाता और मेरा तो कभी नहीं जाता, है ना। इन एंडीमियन इज अ नॉवेल बाय बेंजामिन डिज़राइली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना ऑफ क्रॉसवेज। डायना ऑफ क्रॉसवेज ये भी नॉवेल है। रॉन्ग हो नहीं गया धर्मपाल, रॉन्ग तो तुम पहले से ही था, तुमने तो बस लगा दिया था तुक्का, है ना, लगा दिया था, रॉन्ग तो पहले ही था। डायना ऑफ द क्रॉसवेज, ब्यूचैम्प्स करियर, द इगोइस्ट, ये सब एक व्यक्ति की नॉवेल्स है। मॉडर्न लव उसका सोनेट कलेक्शन है। हु इज द नॉवेलिस्ट? जॉर्ज मेरेडिथ, मिसेस गैस्किल, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी। इतने सारे क्लूज आपको दे दिए हैं जी। उत्तम, सोनू, अपर्णा, जूली, प्रतिभा, शेनिशा, पूजा, फिरोज, अजय, किरण, वेरी नाइस। क्लूज बहुत सारे दे दिए आपको। द इगोइस्ट उसी की नॉवेल है। ब्यूचैम्प्स करियर उसी की नॉवेल है। मॉडर्न कॉमेडी एक ऐसे भी है उन्हीं का, और अ कॉमेडी नैरेटिव भी उन्हीं का है। और हिज वाइफ वॉज इलोप्ड विद अ पेंटर, और he is said to be the most beautiful, most handsome person in England। और इतने सारे टाइटल जिसके पास है उसका नाम है जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ is known for extended sonnets. He wrote 16 line sonnets, right? He wrote 16 line sonnets instead of 14। 16 लाइन के सॉनेट्स इन्होंने लिखे थे, राइट। डायना ऑफ क्रॉसवेज उन्हीं की नॉवेल है, जॉर्ज मेरेडिथ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमेडी इन नैरेटिव? बताओ अब आंसर। कॉमेडी नैरेटिव कौन सी है इसमें? द इगोइस्ट, ब्यूचैम्प्स करियर, द एडवेंचर ऑफ हैरी रिचमंड,
विक्टोरिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज द इगोइस्ट। सॉरी, द इगोइस्ट की सब टाइटल ही है अ कॉमेडी इन नैरेटिव। राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए, नॉट सी। 44th, न्यूसन। न्यूसन is a character. Obviously, Newton is a character. And Newton is a character in Far from the Madding Crowd, Test of the Deer Were Wilds, Mayor of Casterbridge, Under the Greenwood Tree. In which work the character Newton appears? Newton किसमें character है? Question number 44. शाबाश, फटाफट आंसर करिए। सोनू, फिरोज, अजय, उत्तम, पूजा, निशा, सुबोध, अपर्णा। वेरी नाइस, कमान कमान, सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है ना। चाहे बी दो, चाहे सी दो, चाहे ए दो, चाहे डी दो, चार के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं, वहां पर भी टिक कर देते जी। कमलिनी बारीक, प्रतिभा उपाध्याय, बस फटाफट आंसर करते रहो। हुड्डा ताहिर, शाबाश, बस कीप ऑन आंसरिंग। यस, रानू निषाद। एंड न्यूसन वो करेक्टर है जिसको माइकल हेंचर्ड अपनी वाइफ 5 गिनीज में बेच देता है। राइट, ही सेल्स हिज वाइफ टू द शिपमैन न्यूसन एंड द नेम ऑफ द वाइफ वाज एलिजाबेथ जेन। राइट, 5 रुपए में बेचता है उसको, 5 गिनी में बेचता है। और द करेक्टर अपीयर्स इन मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। आंसर इज सी। अजय का जवाब है गलत। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। Thomson Ubright and Eustacia Y. Now the names of 2 characters are given here. Thomson Ubright and Eustacia Y. These are the 2 characters and they appear in which novel? The Mayor of Casterbridge, Return of the Native, The Woodlanders, Jude the Obscure. Question number 45. बोलिए फटाफट आंसर बोलिए। 45th का आंसर क्या है? यूस्टेसिया वाई, टॉमसन यूब्राइट, वाइल्ड ड्यू, ये सब कहां अपीयर करते हैं? दे अपीयर इन द नॉवेल। और एक और करेक्टर है, टॉमसन यूब्राइट का भाई है क्लीम यूब्राइट, and all of them appear in a single novel, and that novel is Return of the Native, published in 1876. Right, Return of the Native में अपीयर करते हैं। चलो फिर रेनू ने सी लगा दिया है, बट राइट आंसर इज बी। क्लियर? रेनू एंड रानू both have clicked C. For how many guineas does Hankard sell his wife? For how many guineas does Hankard sell his wife? 5 million, 6 million, 10 only, 5 only. 46th. किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। हुड्डा का गलत है बस। पूजा, रानू, कमलिनी, जूली, धर्मपाल, सब्बाश, प्रतिभा उपाध्याय, नीरज कुमार, क्या बढ़िया जवाब दिए हो ना।
अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वो शराबी आदमी शराब के नशे में 5 गिनीज में अपनी वाइफ और डॉटर दोनों को बेच देता है न्यूसन को। किसको? न्यूसन को बेच देता है, एलिजाबेथ जेन को, अपनी वाइफ और अपनी डॉटर दोनों को बेच देता है। कितने रुपए में? 5 गिनीज में। इसका आंसर डी है। धर्मपाल ने कहा था 5 मिलियन। 5 मिलियन का मतलब पता है कितना हुआ? कितने लाख हो गए? 5 मिलियन में 50 लाख। और 50 लाख क्या? रुपया नहीं, गिनी। गिनीज क्या होता है? सोने के सिक्कों को गिनी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज 47th। What was the name of Tess's child? Right, when Tess was working in her neighborhood, she was seduced by Alec D'Urberville, and उसका रिजल्ट हुआ कि she bore a baby. And what was the name of the baby? Though the baby died after a few months, what was the name of the baby? Unhappy, sorrow, disaster और Alec? What was the name of the baby? अगर आपने पढ़ा है तो जरूर आंसर आपको आता है, और नहीं पढ़ा है तो स्टिल यू हैव टाइम टू गो थ्रू। अभी भी टाइम है। द नेम ऑफ द बेबी वॉज सॉरो। बेबी का नाम होता है सॉरो। सॉरो वॉज द नेम ऑफ टेशेस बेबी। राइट, टेस के बेबी का नाम होता है, टेस के चाइल्ड का नाम होता है सॉरो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48। द फेमस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ जॉर्ज गिसिंग। जॉर्ज गिसिंग की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, एंड दैट इज वेरी मच फेमस। जॉर्ज गिसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, और इतने इंटरेस्टिंग आदमी कि ही मैरिड ट्वाइस, और दोनों ही मैरिज मैरी इन हेस्ट एंड रिग्रेट इन रेस्ट। वही काम हुआ, और एक प्रोस्टिट्यूट के साथ भाग गए थे, एंड हिज लाइफ जो है बिकेम अ डिजास्टर। अमेरिका डिपोर्ट कर दिए गए, वहां से इनके फ्रेंड्स इनको छुड़ा करके लाए, बट फिर वही काम इन्होंने करना शुरू किया। एंड ही रोट मेनी नॉवेल्स, एंड हिज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जो है दैट इज न्यू ग्रब स्ट्रीट, दो ऑल द 4 नॉवेल्स वर रिटन बाय हिम। ये सारी उन्हीं की नॉवेल्स है, एंड द नॉवेल ऑटोबायोग्राफिकल वाज द न्यू ग्रब स्ट्रीट। राइट, न्यू ग्रब स्ट्रीट उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। नेक्स्ट, which of the following is known as the boldest rebel against Victorian values? Hardy was also a rebel against Victorian values, but the name of Hardy is not given here. Charles Dickens, Matthew Arnold, Thomas Carlyle, and Samuel Butler. Who was the rebel against Victorian values? Question number 49th. Sabas Uttam. Very nice. Where are you from, Uttam? And how did you come to know about my channel? Uttam and Kiran. Right, my question आप दोनों से है. How did you come to know about this platform, about the channel, about me? मेरे बारे में पहले से भी कुछ जानते थे कि डायरेक्ट चैनल पर ही पता चला है आपको? बताइएगा कि किसने शेयर किया था आपको चैनल, फिर आप आ गए हमारे पास। ये आंसर इसका क्या है? जो रिबेल है विक्टोरियन पीरियड का, द ग्रेटेस्ट रिबेल जिसको कहते हैं, हिज नेम वाज सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर वाज द रिबेल अगेंस्ट विक्टोरियन वैल्यूज, और इतना रिबेल है, राइट, इतना रिबेल है
he could not contain himself in England and he fled to New Zealand, and New Zealand के remote area पर he based one of his novels, and that was Erhun, that was a utopia. And then he wrote his autobiographical novel The Way of All Flesh. You are from Odisha. Wow, that's great. That's great. You are from Odisha. How did you come to know about the channel? This is the next question. Right? Right answer to the question is D. Samuel Butler. Right? Which of the following is known as the boldest rebel against Victorian values? From the given options, Samuel Butler is the right answer. Clear? Question number 50. The Way of All Flesh, Samuel Butler, and here you see the cover page, Dover Thrift Edition, and the line. All animals except man know that the principal business of life is to enjoy it. All animals except man know that the principal objective of life is to enjoy it, and they do enjoy it as much as man and other circumstances will allow. Who made the comment? You are from Hyderabad. Wow, great. You're most welcome to the platform. And how did you come to know about my platform, about your platform in fact? All animals except man know that the principal business of life is to enjoy it, and they do enjoy it as much as man and other circumstances will allow. These lines are from the novel The Way of All Flesh, and The Way of All Flesh is a novel by Samuel Butler. Right? It is a novel by Samuel Butler, who was the boldest rebel against Victorian values. Clear? Question number 50. And then let's see Erhun. Erhun is also a novel by Samuel Butler. Samuel Butler. And the word Erhun is an anagram. Anagram of what? Anagram of nowhere. Anagram of nowhere, where W and H, they are transposed. Right? This is an anagram, and the novels, it's set in a distant land in New Zealand somewhere. And here are the most important, the most amusing point is that the sick people are put into the prison. Those who are ill, who are sick, they are put into the prison, they are put behind the bar, and those who are criminals, are put in the hospital. क्रिमिनल हॉस्पिटल में रखे जाते हैं, और जो बीमार लोग हैं उनको जेल में रखा जाता है. बीमार को जेल में और प्रिजन में रखा जाता है सिख को. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप बीमार होते हो, इट मीन्स यू हैव मेड यू मिस्टेक इन योर ईटिंग सिस्टम. खाने के सिस्टम में आपने गलती करी है, तो यू मस्ट बी पनिश्ड. इसलिए योर फेवरेट प्लेस इज जेल, प्रिजन. और अगर आप क्रिमिनल हैं, इट मीन्स यू आर मेंटली सिक, यू आर मेंटली डिस्टर्ब, एंड योर ट्रीटमेंट इज इन द हॉस्पिटल, नॉट इन द जेल. ये एरहुन की खास बात है. राइट? और खास बात है. एंड द नॉवेल इज इन द कैटेगरी ऑफ यूटोपिया. ये यूटोपिया है. All right, so that was today's last question. Thank you so much for showing your presence here. Thank you so much for listening to me so attentively, and thank you so much for liking and sharing the channel. Right, all the best. आप सभी को good luck. मिलते हैं tomorrow on Victorian poetry. Right, tomorrow's questions will be on
Mr. Tennyson, Browning, Arnold, Elizabeth Barrett Browning, right, and the pre-Raphaelite brotherhoods. Thank you so much. मिलते हैं tomorrow. Good luck. Bye bye. Good night. Take care. All the best. जय हिंद, जय भारत.